Hello, children. Today we will be reading and reciting the poem The Arrow and the Song, written by Henry Wadsworth Longfellow. Firstly, we will recite the poem and you will sing along with me. Okay? And then I will explain you the whole poem. What is the actual meaning that comes out from this poem? Let's start. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. So this poem, written by Henry Wadsworth Longfellow, he is an American poet. This particular poem, beta, is it is about the impact of a song. हम कोई गाना, कोई गीत गाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसका कंपैरिजन किया गया है एक तीर, एरो जानते हैं ना आप, एरो. तो एक एरो जो कि हवे में शूट किया गया है. एक तरीके से एक जर्नी दिखाई गई है एक एरो की और एक सॉन्ग की. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग अंडर अ ट्री इन ओपन एयर. If you can see the clouds, you can see the sky, and you are singing a song, okay? Just in the same way, you shot an arrow. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. हवा में एक तीर छोड़ा मैंने, वो वापस आकर धरती पे गिरा. It fell to the earth, but I don't know where. लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा शॉट किया हुआ एरो कहाँ गया. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Swiftly, इतनी तेज़ी से वो तीर झट से निकल गया कि मेरी आंखें उसे देख ही नहीं पाईं. Now the poet says, I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. अभी उन्होंने एरो एक शूट किया था. Now he is saying, I breathed a song into the air. मैंने खुले आसमान में एक गाना गाया. इट अगेन फेल टू द अर्थ. वो वापस तो आया धरती पर कहाँ गया आई डोंट नो. फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग. सो फॉर द पोएट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द फ्लाइट ऑफ द सॉन्ग एज वेल एज द एरो. दिस लाइन मीन्स किसकी इतनी पारखी नज़र है कि वो उस एरो की फ्लाइट और इस सॉन्ग की फ्लाइट को पकड़ सके. कोई फॉलो कर सकता है. अब फिर से वो अपने एरो की कहानी पे वापस जाते हैं. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक. यू नो ओक इज़ अ ट्री. ओक ट्री होती है. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही वेंट एंड सॉ द एरो वॉज स्टक इन एन ओक ट्री. Long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroke. The poet found his arrow and the arrow was unbroke. Unbroke means जो टूटा ना हो. वो सही सलामत एरो उनको वापस मिल गया. अब the poet now comes back to the song, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. And he found that his song was kept in a very perfect condition in the heart of his friend. What did you understand by this poem? What did you understand, children? I will tell you the real meaning of the poem. Now, symbolically, the arrow may represent unkind or harsh words. हम जो कड़वे words बोलते हैं, sometimes when we do not realize and say something very unkind, ये एरो रिप्रेजेंट करता है, एरो को रिप्रेजेंट करता है. एंड द सॉन्ग स्टैंड्स फॉर काइंडनेस एंड प्लीजिंग वर्ड्स. बोथ वेंट अवे फ्रॉम द स्पीकर. स्पीकर के मुंह से ये दोनों निकले, हार्श वर्ड्स एंड काइंड वर्ड्स.
And the speaker, when realized कि ये दोनों तरीके की बातें, they stay in the world, इस दुनिया में ये दोनों रह रही हैं, एंड दोनों अनब्रोकन हैं. दे कैन नॉट बी ब्रोकन. ये कहीं जा नहीं सकती, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता. वंस द स्पीकर स्पीक समथिंग, कोई कुछ बोलता है, वो रहती हैं, वो बातें रहती हैं. सो द पोएम रिप्रेजेंट्स द जॉय and happiness in the form of a song, and the impact of hatred, unkind words, in the form of an arrow. Every chapter, every poem gives you some lesson, and the lesson is, do not spread hatred. You have to spread kindness, which will remain in the hearts of your friends and every person around you. In the next page, I have given you the summary of the poem. You may write it down in your copy, and if you have any doubt, you may put it on the comment box, and I will solve your queries in the next video. If you find some words difficult, you may write them also in the comment section, and I will clear the meanings. Thank you, class.